Assalamu alaikum students. This is your lecturer Saima Yaqub once again with our topic Introduction to Psychology, as we all are on the first chapter. And before that, in our previous class we discussed different definitions of psychology. Today we will discuss the goals of psychology and then the application of this psychology in different fields. So let's get started. Coming towards the goals of psychology, basically psychology has four main goals. It is to describe a detailed record of behavior. Then, as we say that basically, if you look at it, it is that the main goal of psychology is to describe, to understand, predict, and control the behavior. Once we say description or naming and classifying, they are based on making a detailed record of a behavior. Then the second goal of psychology is understanding behavior, and it is met when we can explain why an event occurs. एक चीज को समझना, एक इवेंट या सिचुएशन को समझना कि ये क्यों हुआ is the second goal of psychology. Understanding usually means that we can state the cause of a behavior. ठीक है? थर्ड वन इज प्रिडिक्शन. ठीक है, प्रिडिक्शन क्या होता है कि जब आप एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने फोरकास्ट क्या किया एक्यूरेटली कि ये बिहेवियर जब हुआ है तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए, दैट इज द प्रिडिक्शन. सो prediction is the ability to accurately forecast the behavior. Fourth one is control. Control simply means altering conditions that influence behavior in predictable ways. ठीक है, यानी कि आप जो हैं वो जो भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके आप समझते हैं कि ये कंडीशंस जो हैं ये आएंगी, तो आपने फिर उस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है सिचुएशंस के मुताबिक. सो दिस इज वेयर योर कंट्रोल कम्स. अच्छा, now coming to the applied fields of psychology, कहाँ कहाँ psychology जो है उसको apply किया जाता है और कहाँ कहाँ ये applicable हैं. There are so many fields because psychology is a very broad field. So being a pure science, it has many practical application in today's world, and many psychologists are busy in various fields of life. So if we look at the detail of it, or if we open up, so throughout the world, psychology is being applied in the following ways. First of all, it's clinical psychology. The clinical psychologists, what they do is that they are concerned with the diagnosis and treatment of a wide variety of emotional and behavioral problems. For diagnostic purpose, clinical psychologists use various types of intelligence, personality, and ability tests. For the treatment of behavior disorders, clinical psychologists use various therapeutic techniques. एंड इसमें जिस तरह से हम लोग के देखें ना, छोटे बच्चों को भी कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, बिहेवियर ट्रेंट्रम्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका मकसद ये होता है कि इस लिहाज से फैसिलिटेट किया जाए. ठीक है, देन व्हाट दे डू, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये होता है कि दे बेसिकली इवेल्युएट, ऑल राइट, एंड एनालाइज एंड they evaluate, analyze, and on-job trainings. ठीक है, and their job is to select the job applicants. Basically ये लोग बैठे हुए होते हैं ऑफिस जॉब में, जो वर्क इन्वायरमेंट होती है उसमें भी हमें काफ़ी किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरना पड़ता है. तो ये साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठ के, तो उनका ये होता है कि while interviewing they judge the job applicants,
फिर किसी का भी जॉब एनालिसिस करना हो, देन इवेल्युएशन होती है, then how they can improve the work environment and human relations, right? Next is educational psychologists. They are available in schools and universities, colleges वगैरह में, where they study the generalized behavior of a student towards the education standard or the study. They conduct standardized intelligence tests and offer a reasonably good prediction of how well a student can be expected to perform. Next one is your consumer psychologist. ठीक है, ये पाए जाते हैं आपके where it is the researches are being taken place or conducted, और पैकिंग मटेरियल और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मेथड्स को ये टेस्ट करते हैं, एंड दे डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट यूजर्स एंड कंडक्ट पब्लिक ओपिनियन पोलिंग एज वेल. ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में भी शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले तक इन चीज़ों को नहीं देखा जाता था. अभी ये क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी प्रोडक्ट की या चीज़ों को जिन कंट्रीज में इनको देखा जाता है, वहां पे यू हैव दीज कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट्स. तो अभी पाकिस्तान में भी जिस तरह नेस्ले की कंपनी है या पेप्सी की कंपनी है, वहां पर ये लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि हाई लेवल वाली कंपनीज होती हैं. लेकिन छोटी कंपनीज में अभी भी वी डोंट हैव एनी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट. Details of all these notes are available in your book and I will mention the pages in the end. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी once you listen to my lecture. Please make sure that your book is lying right in front of you so that you don't have any problem in understanding it. Now let's come to the developmental psychologists. They carry out basic and applied research on child development, adult developmental trends and aging. They do clinical work with disturbed children. Developmental psychologists, they study changes, basically physical, emotional, cognitive and social that occur in people throughout their lifespan. एक बच्चा है, उसकी पैदाइश से लेके उसके बूढ़े होने तक वो पूरा उसका जो लाइफ स्पैन है उसमें वो क्या क्या किन किन ट्रेंड्स में से गुजरता है, कौन से फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस, उनको ये स्टडी करते हैं. They attempt to sort out the relative influence of heredity and environment on certain types of growth and to learn the causes of developmental abnormalities. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट्स. दे आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. ठीक है, बाजुकात आपने नोट किया होगा आपकी फ्रेंड्स में, आपके स्कूल फेलोज में, आपके कजन्स में कोई एक बच्ची ऐसी है या बच्चा ऐसा है जिसके वेज के साथ हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, और either we want to be like them or we are not happy in their company or we want to avoid them, या वो जब आए तो उस टाइम पर हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं. तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन एटीट्यूड्स को पढ़ते हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर हावी होते हैं. राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकल साइकोलॉजिस्ट. सो मैनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस, स्पेशली मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है. Medical psychologists, they study the relationship between stress, personality, and diseases like heart attack, ulcers, high blood pressure, and emotional problems associated with illness or disability. वैसे तो ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है या अल्सर्स जो हैं वो हमें ज़्यादा नमक की वजह से या ज़्यादा
स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है, या हार्ट अटैक जो है वो हमें हैवी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है जो कि फैट्स के साथ हो जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल दीज डिजीजेस, सबसे पहले जब आप स्ट्रेस में हैं या टेंशन में हैं तो सबसे पहले तो इट अटैक्स योर स्टमक, ठीक है। उसके बाद फिर जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी क्या होता है कि फ्लो ऑफ ब्लड है ड्यू टू डिफरेंट इमोशनल स्ट्रेसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू। और हार्ट अटैक जो है दैट हैज मोस्टली टू डू विद द ट्रबल्स एंड द टेंशंस एज वेल, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ये लोग स्टडी करते हैं बिकॉज आपके स्ट्रेसेस, आपकी एंजाइटी और आपके डिप्रेशंस का डायरेक्ट ताल्लुक होता है with your stomach problems, with your blood pressure problems and the heart problems, ठीक है। So medical psychology is today, nowadays, now it is recognized as the branch of medical science. अच्छा, forensic psychologists क्या करते हैं? They study problems of crime and crime prevention, ठीक है। इनका ये होता है कि दे जेल में जो लोग मौजूद हैं, प्रिजन में जो मौजूद हैं, उन्होंने किन वजूहात की बिना पे कोई क्राइम कमिट किया, एंड देन बीइंग इन अ प्रिजन उनको रीहैब की ज़रूरत है कि नहीं है। ना वी टॉक अबाउट रीहैब। रीहैब क्या है कि अगर आप आदी मुजरिम हैं तो आपको कैसे ट्रीटमेंट दी जाए कि आप निकल जाएं। जिस तरह ये जो नशे के आदी होते हैं उनको रीहैब में डाला जाता है ना, जिसमें उनकी ट्रीटमेंट इस सेंस में की जाती है कि वो हर किस्म के जो नशे की आदत है वो उनकी छूट जाए। तो इसी तरह जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्रिमिनल्स को रीहैब ट्रीटमेंट्स देते हैं वाइल दे आर इन द प्रिजन, ठीक है, सो दैट वो आदी मुजरिम जो बना हुआ है वो उन चीज़ों से निकले। These psychologists, they apply knowledge of human behavior to legal matters, jury selection, method of cross-examination, and reliability of eyewitness testimony. They may also help police to construct personality profiles of criminals, train them to intervene appropriately in such high stress situations as family quarrels, crowd control, and hijackings, etc. So, details are given in your book and you can always cater to that. Next one आपके पास आ जाता है applied animal psychologist. They are basically working in the zoo and they are employed to create some entertainment settings for the animals in the zoo. And बिहेवियर खाली इंसानों के नहीं होते हैं, बिहेवियर जानवरों के भी होते हैं, और उनको भी स्टडी करना और जानवरों को उनके मुताबिक ट्रीट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। And the number of applied animal psychologists are on the staff of the universities, veterinary universities and the hospitals, or they are in practice with the veterinarians as well, ठीक है। बट अगेन आई विल से कि इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बाहर के मुल्कों में ज़्यादा हैं। हमारी कंट्री में अभी इस चीज़ का आना और डेवलप होने में भी काफ़ी टाइम है, बट स्टिल we are working towards it. Coming towards the environmental psychologists, they are concerned with the general questions of our place in the environment. And environmental psychologists, they basically study the behavior of the city dwellers. They study ways in which buildings and cities can be designed to better serve human needs. They also investigate the effects of surrounding temperature, noise, and air pollution on people and animals. Next one is experimental psychologists. They apply scientific research methods to the study of human and animal behavior, their learning, sensation, perception, personality, motivation, emotion, and social behavior. They focus on the biological foundation of behavior and seek to understand the relationship between biological changes and psychological events, and that is why they are also called physiological psychologists as well.
So, with that, we come to the end of this chapter. In this chapter, we basically cater to the definitions of psychology and then also the goals, along with the different fields of psychology, in which psychology can be applied. So, I hope that the concepts are clear to you. If not, you can always consult with the book. Right from page number 13 till page 19, you have all the information given. And once again, I will repeat that while listening to my lecture, keep this book open in front of you so that you are not confused in anything. As for your assignments, I have given two questions here. One is learn the different ways of how psychology is applied, and then briefly define the task of clinical, environmental, and educational psychologists. The point of giving this last question specifically is that you have to give more importance to these three main um, psychologists more. Why? Because the question in the board exam mostly caters to these as far as your long questions are concerned. The rest you can always read and go through for your MCQs purpose and short question purpose. So thank you very much for today, and I'll see you in the next class.